Welcome to Safe Online Classrooms. We are discussing 4 topics. One is orientation, the other is vocabulary building, and then using 5 difficult words, and finally how to write like an intellectual or professional writer or a CSS topper. So please copy paste the 4 topics as comment and read it. I want that you should be involved in the whole process. And at the end of the lecture, you have to deliver this lecture in shorter version in Safe 2. That's why be very systematic, organized, attentive. Attentive doesn't mean that you should be obsequious, because I'm an erudite. I don't want obsequious students, and there will be some esoteric discussions, and for that it may not appear to you egregious, because Aristotle was a peripatetic teacher. So I used all these 5 difficult words which I have given to you today in the morning. So let us do the first activity. Please copy paste the topic as comment, everybody. ये जो ऊपर मैंने टॉपिक दिया है इसको कॉपी करें कमेंट में. You should know 1, 2, 3, 4. 4 topics. We have 4 topics. You should have answers to these 4 topics. ये जो 4 topics है इनको आपकी जवाब आने चाहिए at the end of the class. And then you go to Safe 2 and you deliver your own lecture. So please copy paste the 4 topics that we have in this session. कौन कौन से 4 हमारे topics हैं? Can you write them one by one as a comment? I don't see your comments. Comments are pending. Why comments are pending? So let me refresh my system. I refreshed it already. Comments are pending. The problem is okay. So maybe I can see your comments later. I'm receiving feedback from my assistant that there are some problems with the comments. So topic number 1. I hope I'm audible and visible. Topic number 1 is orientation to safe online classrooms. Okay, I saw the first comment of Chaudhry Zamar Ali Gujar. Welcome to Safe Online Classrooms. So let me give you orientation of Safe Online Classrooms. Can anybody tell me where from the word orientation comes? Orientation. इसका क्या मतलब है orientation? Orient means east. And what is the opposite of orient? That is Occident. Occident. O-C-C-I-D-E-N-T. Occident. Orient, Occident.
So orient means where the sun rises, and Occident where the sun sets. So orientation means when you start your day and you know what to do in the day. So that's why the word orientation. ये जो orientation का लफ्ज है तो इसका क्या मतलब है? Orient का मतलब है मशरक. Occident, OCCIDENT. Imran Khan, as you are writing, so I am correcting you. This is your training. Occident, Orient. Occident, Orient. Please write these two words. Occident, Orient. A very important words in professional writing. जब आप सही सही राइटिंग करोगे तो इसमें दो अल्फाज बहुत ज्यादा आते हैं. Orient and Occident. For example, we say that he was an Occidentalist or Orientalist. Orientalist. Sikandar Zaib, I see your comment now, no problem. Comment started. So, Occident means West. Orient means East. Orientalist is that person from the West who is expert on the East. Okay, this is very interesting. Who is Orientalist? Orientalist. OCCI. Spelling is OCC, not X. So, Orientalist is a person who is expert on East, but he and she is from the West. After Dark Ages, Occident or West started work on philosophy and science. So they also studied the East. अभी जो पश्तो ज़बान है तो इसको किसने जिंदा किया? पंजाबी पे किसने काम किया है? ये तमाम मगरबी ओरिएंटलिस्ट ने किया है. बुल्ले शाह और रहमान बाबा और खुशाल खान खटक जो है, इन लोगों पे रिसर्च किसने की है? दुनिया के अरबों पे बेहतरीन किताब अंग्रेज लिखते हैं. इस्लाम पे बेहतरीन किताबें जो है वो अंग्रेजों ने लिखी है. तो वो बंदा जो मगरिब का होता है लेकिन मशरिक का एक्सपर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट. ठीक है. नाम चाम्स्की, यस, ही इज फ्रॉम द वेस्ट बट ही राइट्स ऑन द ईस्ट. हमारा अल्लामा इकबाल साहब जो है वो मगरिब में पढ़ा लेकिन शायद मशरक बन गया. सो दिस इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन जो है ये आपको ओरिजिन, जैसे सूरज निकलता है तो आपको सारी चीजों का पता चलता है. तो सेफ का ओरिएंटेशन क्या है? सो सेफ, SAF, stands for Self Actualization Foundation. What is self-actual? What is self? Self is the totality of body, mind, heart and soul. Self क्या है? क्योंकि हमारा जो ये इदारा है इसका नाम है सेफ. You are safe in safe. SAFE. So safe means self-actualization foundation. So let us discuss each word separately. That what is self? Self क्या है? Self is the totality of body, mind, heart and soul. Body, mind, heart and soul. This is important for self-recognition. बंदा अपने आप को जान तो ले कि सेल्फ का क्या मतलब है, जात क्या चीज है. What is self? Self is the totality of body, mind, heart and soul. Now actualization means that when you make your potential actual. Making potential actual. Making potential actual.
अब आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं तो बेहतरीन राइटर बन सकते हैं, स्पीकर्स बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, अमीर लोग बन सकते हैं, खुश जिंदगी गुजार सकते हैं। ये पोटेंशियल आप में है। पोटेंशियल का मतलब क्या है? मख्फी एनर्जी, खुफिया एनर्जी। ठीक है, ये आप में है, पोटेंशियल है आप में। Whether you do it or you don't do it, it's the question. ठीक है ना? खाना मौजूद है, लेकिन खाना को आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे? So when you eat it, it is actualization. When you don't eat it, so it is non-actualization. ठीक है, तो सेल्फ क्या है? The totality of body, mind, heart and soul. Physicality, mentality, इमोशनैलिटी, स्पिरिचुअलिटी, इन 4 चीजों का नाम सेल्फ है। तो आपका जो पोटेंशियल है, जो आपका रियल पोटेंशियल है, क्या आप इसको एक्चुअल करते हैं? ए पर्सन रन 2 kilometers, but the potential is 10 kilometers. So when the person runs 10 kilometers, it is self-actualization. आप रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर ताकत मौजूद है कि आप 10 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं। तो जब आप 2 से 10 पे आ जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाउंडेशन है, ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है पाकिस्तान में, और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हम बना रहे हैं, बहुत सून उसका इनॉग्रेशन भी होगा। तो आपके थोड़े बहुत जो पैसे आते हैं ये उधर फाउंडेशन में चले जाते हैं, मैं उसको जेब में नहीं लेता। तो इसका पर्पस क्या है कि भाई इंसानों का जो सलाहियत है वो एक्चुअल हो जाए। We build your capacity, your capability, and then it becomes actual. This is the philosophy behind self-actualization foundation. हर बंदे में सलाहियत है। टैलेंट इज बेसिकली स्किल। टैलेंट जो है, जब आप बार बार एक काम करते हैं तो आप उसमें टैलेंटेड बन जाते हैं। आप नहीं करते तो नहीं बनोगे, करते हो तो बन जाओगे। मुझे जी वोकैबुलरी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, मैं बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो ठीक है, ये तो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन इसका हल करने के लिए आप क्या करते हैं? वॉट यू आर डूइंग रिगार्डिंग दिस? अब एक्शन क्या ले रहे हैं? सो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि यार मेरा सेल्फ है, मेरी बॉडी है, मेरा माइंड है, मेरा दिल है, मेरा रूह है, ये सारी चीजें हैं, मैंने इसको एक्चुअल बनाने हैं। मेरे अंदर ताकत है लेकिन उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। सो दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फाउंडेशन। अब तकरीबन जो है सेल्फ में 18-20 क्लासरूम्स है। 18 से 20 जो है वो क्लासरूम्स है। देयर आर 18 to 20 classrooms. Safe 1, Safe 2, Safe 3, Safe 4, Safe 5, Safe 6. 6 are general classrooms. ये जनरल क्लासरूम्स है, ठीक है। सेफ 1 जो है सबसे पुरानी क्लासरूम है, एकेडमिक चीजें आपको मिलेगी उसमें। सेफ 2 जो है वो आपके अपने प्रैक्टिस के लिए है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज। आपने मेरे लेक्चर सुना, आपने नोट किया, आपने जाके सेफ 2 में लाइव आके दोबारा बोला, सेफ 2। सेफ 3 जो है वो भी सेफ 1 की तरह एकेडमिक है, ठीक है। सेफ 4 जो है, सेफ 1, सेफ 2, सेफ 3, सेफ 4। सेफ 4 जो है वो LPCS है। LPCS इस क्लास के बाद हम उधर जाएंगे, LPCS है वो सेफ 4 है। और सेफ 5 जो है जिसमें आप अभी बैठे हैं, और सेफ 6 जो है ये वो भी एकेडमिक ग्रुप है। तो मैं कुछ सिंपल करता हूं, सेफ 1, सेफ 3, सेफ 6, ये 3 जो है ये एकेडमिक ग्रुप्स है। इसमें आपको रीडिंग मटेरियल और आपको पुराने क्लासेस सारे मिलेंगे। सेफ 2 जो है आपके प्रैक्टिस के लिए है। सेफ 4 जो है वो LPCS है, और सेफ 5 जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम है जिसमें अभी हम बैठे हैं। तो ये तो सेफ 1 से सेफ 6 हो गए। इसके अलावा हर कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है CSS का, उसका अपना एक क्लासरूम है, और तकरीबन 10-15 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के क्लासरूम्स है। ये सारा जो है आपका सेफ है। सो दिस इज ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन है।
Number two is vocabulary. Now, don't use difficult words, use terminology. Don't use difficult words, use terminology. Please make it a comment. Don't use difficult words, use terminology. This is the basic formula of vocabulary. Vocabulary का basic formula क्या है? Don't use difficult words, use terminology. Terminology means technical language. Technical language, glossary, diction, which is technical. Like the language of engineering, the language of medical colleges, the language of philosophy, the language of psychology, the language of literature. ठीक है? तो हर जो ब्रांच है नॉलेज का, उसके अपने टर्मिनोलॉजी है, उसके अपने इस्तिलाहात है, वो यूज करना जो है, दैट विल मेक यू प्रोफेशनल राइटर. नंबर टू, एविडेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन. एविडेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन. Evidence based presentation. Please write it. Don't use difficult words, use terminologies. Number one. Number two, evidence based presentation. So, evidence based. Evidence based means कि आपके पास सबूत है तो बात कर रहे हैं. सबूत के साथ बात करना जो है उसको evidence based presentation कहते हैं. Evidence based presentation. These two things are important. इन दो पे अगर आपने काम कर दिया, you will be an excellent writer, an excellent speaker. Now, how to know terminologies? When I was preparing for CSS and I was doing my intellectual studies, so I had dictionary for every subject. हर एक सब्जेक्ट का मेरे पास डिक्शनरी होती थी. मतलब जियोग्राफी का अलहदा, जियोलॉजी का अलहदा, सोशियोलॉजी का अलहदा, साइकोलॉजी का अलहदा, फिलॉसफी का अलहदा, इंटरनेशनल रिलेशंस का अलहदा, पॉलिटिकल साइंस का अलहदा. तो हर एक सब्जेक्ट के अलहदा अलहदा सेपरेट अलग अलग डिक्शनरी. दैट इज terminologies. And if you want to have one dictionary for terminologies, so that is Merriam-Webster Third College Edition Dictionary. Third College Edition Dictionary. जो Webster Dictionary है, Webster uses terms, while Oxford Advanced Learner Dictionary uses words. So for language, Oxford is must, and for erudites, for knowledgeable people, for professional people, you need Webster dictionaries. जो गूगल डिक्शनरी इस्तेमाल करता है, अब गूगल में एक लफ्ज लिखते हैं तो वो जो डिक्शनरी है वो कौन सी है? ऑक्सफोर्ड. लेकिन उसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं और वो आप वेबस्टर भी उसमें डाल सकते हैं. So Webster dictionary was with me, constantly sleeping with me for so many years. काफी साल जो है Webster dictionary के साथ में सोता था, मेरे सीने पे पड़ी होती थी. So that was my journey of vocabulary building. So how to know terminologies? You know terminologies from original books. You know terminologies from original books, not from notes. नोट्स जो आमतौर पर नोट्स मिलते हैं पाकिस्तान में या इधर उधर, उसमें आपको विकेबलरी या टर्मिनोलॉजी नहीं मिलती. वो तो आप खुश करने के लिए, आपसे पैसे लेने के लिए आपको आसान आसान चीजें देते हैं. तो जब आप ओरिजिनल किताब पढ़ते हैं, ओरिजिनल राइटर की किताब पढ़ते हैं, और वो भी काफिर की, वो भी वेस्टर्न की, इंग्लिश की, अमेरिकन की, ऑस्ट्रेलियन की, इंडियन वाले भी गुजारा करते हैं, तो उनकी बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है.
आप अगर इधर ये डोगर शोगर और जहांगीर और ये चीजें पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, मतलब स्टार्ट के लिए ठीक है, बट यू कैन नॉट बिकम अ राइटर, और यू कैन नॉट बिकम अ CSS टॉपर, और यू कैन नॉट बिकम अ प्रोफेशनल राइटर. तो ये जो छोटे मोटे नोट्स आपको मिलते हैं, इससे से आप प्रोफेशनल राइटर नहीं बन सकते. So this was my introduction to SAFE as well as to our today's class. Now let's do it. इसको हमने करना है. So everybody please introduce yourself. You can also ask a question and use 5 difficult words in your introduction. आपने अभी कमेंट करना है, हर एक बंदे ने अपना इंट्रोडक्शन करना है, लेकिन उसमें वोकैबुलरी डिफरेंट यूज करें. ये नहीं कि जी आई एम इमरान खान, सो आई एम फ्रॉम पिशावर, आई लिव इन दिस, इस तरह नहीं. मेक इट अ लिटिल डिफरेंट एंड देन लेट मी गिव यू फीडबैक. So all the words are not terms, but all the terms are words. Yes. So introduce yourself. This is our practice time, and you can also ask questions. जब मैं लेक्चर देता हूँ तो उसके बाद 2 काम होते हैं. आप प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, और या आप क्वेश्चन करते हैं, या दोनों करते हैं. आज हमने इंट्रोडक्शन जरा डिफरेंट स्टाइल से करें. यूज सम न्यू वर्ड्स. एंड राइट नाउ डोंट कॉपी पेस्ट. अगर आपने पहले से कोई इंट्रोडक्शन लिखा है तो उसको दोबारा यहां पेस्ट ना करें. राइट इट नाउ एंड यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस. I have given you notes on these 4 topics. मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उसको प्लीज पढ़ लीजिए. क्लास से पहले भी और क्लास के बाद दोबारा भी पढ़े. Don't make a big introduction, just small one, 2-3 sentences. Then again you can add it. आप इसको add कर सकते हैं बाद में. Don't become perfectionist. Perfectionist कभी जिंदगी में ना बने कि मैंने बेहतरीन काम करना है. बेहतरीन काम कभी आपसे नहीं होगा. जो एक्चुअल है, रियल है, प्रैक्टिकल है, वही करो बस. अगर आपको डिफरेंट नहीं कर सकते तो खैर रूटीन वाले करो. वी विल इंप्रूव. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. फॉर एवरीथिंग वी फॉरगेट समथिंग. तो सजाद अरबानी, दिस इज मी सजाद हुसैन अरबानी फ्रॉम लड़काना एंड आई एम स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध. हाँ, तो सजाद अरबानी प्लीज नोट इट. इसको नोट करें. अब मैं कोई जगह होता तो मैं डिफरेंट कैसे लिखता. ठीक है. हियर इज सजाद हुसैन अरबानी, द स्टूडेंट ऑफ IR डिपार्टमेंट इन सेंट जमशेद यूनिवर्सिटी. My favorite IR theory is new realism, and also I'm working on constructivism. Though balance of power is an interesting theory, but I have to study it more in the context of Palestine-Israel concept. New Marxism was applied, but it could not work. That's why new liberalism is now predominant IR theory in the world.
ये टेक्निकल लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी है. आपने कंस्ट्रक्टिविज्म, न्यू रियलिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, आपने जो है ये IR की थियरीज, बैलेंस ऑफ पावर, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, पैलेस्टाइन इशू, इजराइल हमास नेक्सस. तो इससे से पता चलता है कि भाई तुम IR पढ़ते हो और IR को आपने यहां प्रेजेंट किया. माय फेवरेट थियरी. क्या आपकी फेवरेट कोई थियरी है? अगर है तो लिखे, नहीं है तो वैसे बनाओ, कोई नहीं, कौन पूछता है आपसे. So please rewrite it. Write it now as an IR expert. इसको एक IR के एक्सपर्ट के तौर पर सजाद अरबानी इसको दोबारा लिखो अपने इंट्रोडक्शन को, लेकिन इसमें IR के टर्मिनोलॉजी ले आओ. कोई नए नए अल्फाज इस्तेमाल करो. आज जो वोकैबुलरी मैंने आपको दी थी 5 अल्फाज, उसको इस्तेमाल करो. और 5 अल्फाज कौन से थे? एग्रीजियस, पेरिपेटेटिक, ऑब्सिक्यूअस, एसोटेरिक एंड एरोडाइट. ये नोट्स में मैंने आपको दिए है. आज नोट्स में मैंने उसको इस्तेमाल भी करके दिए आपको, मीनिंग्स भी दी है. जिस तरह इमरान खान ने लिखा है, दिस इज इमरान, आई एम एन एग्रीजियस पर्सन हु बिलोंग्स टू पेशावर. नाउ एग्रीजियस मीन्स वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड. पता उस मीनिंग में यूज किया है, कोई और मीनिंग है इसका. इमरान खान कहते हैं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं. I am graduated last year from UP. Furthermore, I am in search to find good job. As I am not a peripatetic man, but I love to travel. हाँ, तो peripatetic जो है कहाँ से शुरू हुआ है? Peripatetic, that is school of philosophy. And Aristotle was the founder. जो अरस्तु है वो पेरिपेटिक फिलॉसफी का फाउंडर है. अफलातून जो है वो पढ़ के बैठ के पढ़ाता था, लेकिन अरस्तु जो है जब वो पढ़ाता था तो वो घूम घूम के पढ़ाता था और शागिर्द उसके साथ जाते थे. So from there the word peripatetic started. Noman. I, Noman Wilson, domiciled in Islamabad, hold a graduate degree in commerce. अब commerce जो है ये एक proper noun है, तो इसका C आपने capital लिखना है next time. Professional writing इसको कहते हैं. At present, I traverse the entrepreneurial landscape, adeptly orchestrating business ventures. Simultaneously, I strategically participate in corporate pursuits within an NGO, understanding my proficiency in navigating complex cross-cultural professional arena. क्या बात है, excellent. Now fake it and make it. Fake it and make it. अब इसको fake बनाते हैं, ठीक है, नकली है. रियल लाइफ में आप इस तरह की लैंग्वेज नहीं लिख सकते. इसमें 3-4 आप उठाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कॉन्जेस्टेड वोकैबुलरी जो है लोग पसंद नहीं करते. बिकॉज द पर्पस इज कम्युनिकेशन. आपने कम्युनिकेट करना है, अपना मैसेज पहुंचाना है. हाँ, अगर आप कोई टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है, देन दिस इज नेचुरल. एक्सीलेंट, वेरी गुड, आई लाइक्ड इट. अब्दुल गफार. I was agonizing about my future planning. Then I decided to appear in the CSS exam. It is my second attempt and I will pass the exam this time. I have been learning from Naeem Khan for the last 6 months. It is platform of manifold. अभी देखो ना, इसमें कोई गड़बड़ है आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में. It is platform of manifold of knowledge. This platform gives you. This is a manifold platform of knowledge of all compulsory and optional subjects. I am now college with knowledge of these subjects. I will be. अभी देखो college जो है ये verb है या ये adjective है? I will be a CSS after this CSS exam. तो ठीक है, लेकिन इसमें college के अलावा
कोई ख़ास इम्प्रेसिव वर्ड एगनाइजिंग है थोड़ा बहुत, बाकी इसमें मुझे कोई ख़ास जो आज के 5 अल्फाज है वो तो बिल्कुल गायब है, और कोई इम्प्रेसिव वर्ड नज़र नहीं आ रहा जिसको आपको डिफरेंट करे, डिस्टिंक्टिव करे. Ali Murtaza. Here, hi dear, I am called Naveed Ahmed. I am a mathematician. अच्छा, mathematician जो है ये भी proper noun है, तो इसका M capital लिखा करें. Mathematician का M capital. And doing my MPhil in Qurtuba University, Peshawar. My favorite subject is group theory, but it is quite and highly technical. हाँ, अभी देखो ना quite, तो QUIET जो है वो खामोश है. क्वाइट एंड हाईली टेक्निकल टू डिस्कस मैथमेटिकल टेक्नोलॉजी टू दीज पार्टिसिपेंट्स. ये पार्टिसिपेंट्स के हम नहीं कर रहे यार, ये बड़ी मुसीबत है पाकिस्तानी कौम में कि हमें दूसरों की फिक्र होती है, अपने फिक्र नहीं होती. अपना फिक्र करो, लोगों को मारो गोली. फिलहाल जब आप लीडर बनोगे तो फिर आपने लोगों का ख्याल रखना है. अभी तो आपको खुद अपने ख्याल की जरूरत है. यूज करो, बेशक यूज करो, लोगों की परवाह छोड़ो. लोग क्या कहेंगे, कोई इसकी वैल्यू नहीं है. ठीक है. वो मशहूर कहानी है ना कि वो पुराने जमाने में जब बंदा मरता था तो उसको सूरत यासीन पढ़ाते थे. तो वो शागिर्द ने उस्ताद को कहा कि जी वो तो मर गया है, हम. उसने कहा छोड़ो बंदे को, मारा है, जिंदा है, तुम अपनी सूरत यासीन को पक्का करो. तो लोगों को भी परवाह नहीं होती तुम्हारी, हम क्यों परवाह करें. फैसल सरूरी, हेलिंग फ्रॉम. अभी देखो ना, हेलिंग का एच कैपिटल है, ये एच कैपिटल नहीं होना चाहिए. प्रोफेशनल राइटर जो है वो कोई गलती नहीं करता. होल्डिंग अ डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. At present, I am on a larger venture of acing CSS as I want to be an educationist. So, in order to be an erudite in education, I want to be a wayfarer alongside you. Excellent use. Just accept one erudite that you use from today's list. You did not use others. However, it is impressive. Chaudhry Zamar. I would like to introduce myself. I am Tahreem Salim, pertaining to Nankana Sahib. I am a zoologist. अब देखो ना, zoologist पे proper noun है, तो इसका Z आपने कैपिटल लिखना है, as well as educationist. I am extremely happy to get myself included in unrivaled activities under supervision. Being erudite, always wished to attend your classes because it has always been something I have been fascinated with. Excellent, very good. Zabardast. I am Haider Ali and I want to be a CSP in future. For this I will absorb knowledge. हाँ, सिर्फ एब्जॉर्ब करना नहीं है, उसको यूज भी करना है. एंड स्किल्स टू ameliorate my intellectual capabilities. I am persistent and perseverance in attaining this goal, but sometimes hurdles procrastinate my journey. वाह जी वाह, ठीक है, क्या बात है. Excellent. I'm so happy to see good things here. I am in with ये कौन सी अंग्रेजी है यार. I am with होता है, in with पता है, कोई फ्रेज तो नहीं है. The plenipotentiary extraordinary investor ने कहा who is a perpetuating excellent 70 countries. Excellent, very good. You use a lot of good words. Sajjad Hussain, Albani startup, IR second year international relations was first choice because I am very interested to read and analyze histories and theories. There are many favorite theories such as liberalism, neoliberalism, constructivism, Marxism, and so on. I am still trying. M जो है इसके साथ ing आएगा. I am still trying या I still try. M लगाया तो ing लगाओगे. To enhance knowledge in the field of international relations. Excellent. अभी बहुत बेहतर है, देखो ना, प्रैक्टिस बंदा करता है तो बेहतर हो जाता है. It's my aim here to become a knowledgeable and skillful. Skillful एक लफ्ज है इमरान खान. Skillful जो है ये इसमें स्पेस नहीं है. ये स्किल और फुल अलग-अलग नहीं है. Under the mentorship of the goal of my
Dear mother, because of her supporting my life. Excellent, guys. I'm so happy that you guys just started writing professionally. Professional writing means different writing. It is not like the usual writing that you see everywhere. Now, my request is, please go to notes. Notes पढ़े. अभी हम LPCS का क्लास करते हैं. LPCS के बाद आपने जाना है नोट्स पढ़े. नोट्स के बाद सेफ टू में लाइव आ जाए और अपना इंट्रोडक्शन करे. इसी तरह बोल के करे. मजा आएगा आपको. मसल्स आपके ट्रेन होंगे. ये बहुत जरूरी है. 5 मिनट आपके लगेंगे. लोगों की परवाह छोड़ो बस कि लोग क्या कहेंगे. ये बहुत सारा मैं नहीं जी, मैं प्रैक्टिस करूंगा फिर करूंगा. नहीं, ये जो करना है, दिस इज प्रैक्टिस. So now see you we will continue this discussion in LPCS.